हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सप्रेस पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इन टर्म्स ऑफ लेजेंडर पोलिनोमियल्स। यानी इस पी एक्स को जो है, इस सब को लेजेंडर पोलिनोमियल की फॉर्म में आपको लिखना है। क्लियर है ना? मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था, जरा उस क्वेश्चन की तरफ देखो आप, जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वी नो फ्रॉम रोड्रिगो फार्मूला, देखो क्या करने जा रहा हूं। वी नो दैट, हमारे पास रोड्रिगो के नाम से ये फार्मूला होता है। ओके, वी नो दैट द रोड्रिगो फार्मूला इज पी एन एक्स इज इक्वल टू 1/2 दी पावर n इंटू फैक्टोरियल n डी एन ओवर डी एक्स एन, दैट मीन्स एन टाइम डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर minus 1 to the power n. Okay, this is the fundamental formula. Now I am putting n is equal to 0 in this formula. I am putting n is equal to 0 in above formula. We have, this is left hand side p0x is equal to 1/2 the power 0 into factorial 0 d over dx power 0 x square minus 1 whole power 0. We know that 2 to the power 0, the value of 2 to the power 0 is also 1, factorial 0 is also 1. Okay, this is also 1, or d over dx 0 time differentiation, this is also 1, and x square minus 1 whole power 1 is always 1, so that the value of p0x is 1. You know very well. Okay, now I will calculate the value of p1x. Similarly, the Rodriguez formula is pnx is equal to, we know very well the formula, pnx is equal to 1/2 the power n into factorial n into d over dx, the power n means n time differentiation x square minus 1 whole power n. Okay, now I am putting n is equal to 1 in this formula, putting n is equal to 1 in this result, in the result. Okay, so that this is p1x is equal to 1/2 the power 1 into factorial 1 into d over dx x square minus 1 the power 1. Okay, so that this is 1/2, the value of factorial 1 is 1, and differentiation this is 2x, this is cancel out, so that finally x, the value of p1x is x. Okay, this is my second result. Similarly, if I am putting n is equal to 2 in above result, in above formula, so that this is p2x is equal to 1 upon factorial 2 to the power 2 into factorial 2 d over dx, second derivative x square minus 1 complete square. Okay, after differentiation this is 1/8. The value of factorial 2 is 2, 1/2 the power 2 is 4. Okay, if I am differentiating this, this is equal to 2 x square minus 1, 2 into x square minus 1 into 2x. Okay, this cancel out, finally this is 1/2, and after differentiation this is d over dx. I am writing in the next page, this is p2x
is equal to 1 upon 2 d over dx x square minus 1 into x. Okay, so that p2x is, this is 1 upon 2 d over dx, this is 3x square, this is 3x square minus 1. Okay, after multiply and differentiation, you know very well, this is cancel out, sorry, this is my mistake. Okay, this is x to the power 3 and differentiation of x to the power 3 is 3x square, and this is x, differentiation of x is 1. Okay, similarly it is easy to calculate the value of p3x. Now I will not calculate the value of p3 and p4. Similarly, the value of p3x is equal to 1 upon 2, you can easily calculate 5x की power 3 minus 3x. Okay, this is my next result, and p4x is equal to 1 upon 8 after calculation. This is 3x, 35x की power 4, 35 x to the power 4 minus 30x square plus 3. Okay, this is my standard result. I have been solved these results in the last lecture, you know very well. Okay, and we also know p0x is always 1. Clear? p1x is always x. I am requested to you, please memory this results or memory this formula for the further calculation or to solve the next questions. Okay, so now my previous question, I am putting the value, now in this question I am putting the value x to the power 4, x to the power 3, value of x square, and the value of x and value of constant. Okay, so that then after putting the value x to the power 4, x to the power 3, x square in term of p1, p2, p3. Okay, so that the px can be easily reduced in Legendre polynomial. Okay, so that my next task is, now we know, or I have been calculate p0x is equal to 1, p1x is equal to x, p2x is equal to 1 upon 2 3x square minus 1, 3x square minus 1, and p3x is equal to, the value of p3x is equal to 1 upon 2 5x की power 3 minus 3x. Similarly p4x is equal to 1 upon 8 35x to the power 4 minus 30x square plus 30, sorry, plus 3, this is 30. Okay, this is 30. Clear? Now at first I will calculate the value of x to the power 4. Clear? Now I am calculating the value of x to the power 4. Okay, by cross multiply, this is 8 into p4x is equal to 35 x to the power 4 minus 30 x square plus 3. Okay, I am replacing this can be written as p to the power 4x plus 30x square 30
एक्स स्क्वायर सॉरी -3 is equal to 35 x to the power 4. So that I am dividing this by 35. This is 35 p4x plus 30 x square divided by 35 minus 3 divided by 35 is equal to x to the power 4. Okay. Finally, the value of x to the power 4 is 6, 7, okay, minus 3 upon 5. So that the value of x to the power 4 is, the value of x to the power 4 is equal to 8 upon 35 p4 plus this is plus 6 upon 7 x square minus 3 upon 35. Okay, this is my first result. I will put the value of x to the power 4 in the given question. Clear? Now I am calculating p3x or p3x is equal to 1 upon 2 5 x to the power 3 minus 3x. This is also written as 2p3x is equal to 5 x to the power 3 minus 3x. This is also written as p3 plus 3x is equal to 5 x to the power 3, and so that 2p3 plus, according to me this is 3x maybe, plus 3x is equal to 5 x to the power 3. Now I am calculating the value of x to the power 3. So that the value of x to the power 3 is equal to 2 upon 5 p3 my plus 3x upon 5. Clear? Any problem? No. This is my value of x3. Similarly, I am calculating the value of x square from p2x. P2x is, or p2, the value of p2x is 1 upon 2 3x square minus 1, my cross multiply 2p2 is equal to 3x square minus 1, or this written as 2p2 plus 1 is equal to 3x square. So that value of x square is equal to 2p2 plus 1 upon 3. Okay, clear? Or this is also written as x square is equal to 2 upon 3 p2 plus 1 by 3. If you have any doubt or you have any cross question, you can directly ask. Now we know very well p1x is equal to x is equal to p1 and 1 is equal to p0x. Okay, this is also x. I am putting the value of these in, I am also writing the value of x to the power 4, and the value of x to the power 4 is 8 upon 35. मैंने पहले से ही लिखी हुई है बेटा ये p4 प्लस 6 upon 7 x square minus 1 upon 35. Okay, this is my 8 upon 35 फिर x square 3 upon 35. This is 3 upon 35, not 1. I am putting this value in the given question. Okay, clear? Now the px is x to the power 4
प्लस 2x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x minus 3. This is my given question. Okay, clear? This is my given question. Now I am putting the value of x4, x3, x2 and x1. Now putting value of x to the power 4 comma x to the power 3 comma x square comma x comma 1 in above equation. Okay, support this is equation 1. I am putting these values so that this is the value of left hand side, this is px, the value of x to the power 4 8 upon 35. Okay, p4x plus 6 upon 7 x square minus 3 upon 35. This is my first result. Okay, I am putting this value. Clear? Now I am putting the value of plus 2 plus 2 x to the power 3 plus 2x square minus x minus 3. If you have any doubt or you have any cross question, you can directly ask me. This is 8 upon 35 p4 plus I am calculating, this is x square. Listen carefully, this is x square or this is also x square. I am calculating this step here. 6 upon 7 plus 2 common x square. Okay, 7 दूनी 14, 14 6 20 अरे 21. Okay, this is 21 upon 7, 14 6 20 होगा, सॉरी 20 upon 7 x square. Clear? Plus 2 x to the power 3, this step and this step is plus 20 upon 7 x square. Clear? Minus x. I am also solving this or add this. Minus 3 upon 5 35 minus 3. Okay, after calculation this is equal to 106 divided by 35. Okay, I am repeating my statement. 106 divided by 35. Finally this is 106 divided by 35. I am writing here minus 106 divided by 35. Okay, so that px is equal to 8 upon 35 p4 plus 2x to the power 3 2x to the power 3 plus 20 upon 7 x square minus x minus 106 divided by 7. Oh sorry, divided by 35. Okay, यहाँ तक आपका अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी. नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ p3. Now the value of p3 is 2 upon 5 p3. I am putting the value of x3 2 upon 5 p3 plus 3 upon 5x. Okay, x cube is equal to 2 upon 5 p3. Okay, plus
3/5x या 3x/5. Okay, you can also check. Clear? This value. Now I am putting the value of P3 here, so that the value of Px is equal to 8/35. This is P4 plus 2 into 2/5 P3 plus 3x/5. Clear? Plus 20/7 x square minus x minus 106/35. Clear? After calculating this is Px is equal to 8/35. ये तो हो गया P4 प्लस ये कितना निकला भाई 4 P3/5 और अगले वाला कितना निकल गया भाई। डायरेक्टली x वाले को हल करूंगा, पहले मैं x स्क्वायर वाला स्टेप लिख रहा हूं, प्लस 20/7 x स्क्वायर। दिस इज इधर सॉल्व कर रहा हूं, 3 दूनी 6x/5 माइनस x मैंने कॉमन ले लिया, 6/5 माइनस 1 यानी दिस इज x/5। कितना निकला भाई x/5। ओके, प्लस x/5। क्लियर? माइनस 106 डिवाइडेड बाई 35। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू डालूंगा और एक्स की वैल्यू डालूंगा, मेरा काम बन जाएगा भाई। नाउ सो दैट द रिजल्ट इज, लेफ्ट हैंड साइड तो हुआ मेरा पी एक्स इज इक्वल टू, जो हुआ बेटा कितना बना भाई, वो बना था 8/35। मैंने पहले से ही लिखा हुआ है क्वेश्चन को, p⁴ बना हुआ है, प्लस 4/5 है, 4/5 है, दिस इज P3 है, प्लस 20/7 है, एक्स स्क्वायर है, प्लस x/5 माइनस 106/35. Okay, now I am putting the value of x square. Okay, the value of x square is 2/3 p2 plus 1/3, 2/3 p2, 2/3 p2 plus 1/3. Putting in above result. ओके, तो यहां से निकल गया px इज इक्वल टू 8/35 p4 प्लस 4/5 p3 20/7 द वैल्यू ऑफ p2 2/3 p2 प्लस 1/3 प्लस x/5 माइनस 106/35। क्लियर? यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये निकल गया px इज इक्वल टू 8/35 p4 प्लस 4/5 ये हो गया p3 प्लस, जब मैं p2 वाले की बात करूँगा कितना निकल जाएगा 40/5 बटे 21 p2 प्लस 20/21 प्लस x/5। और जब इस वाले स्टेप को और इस वाले स्टेप को सॉल्व किया जाएगा तो मेरे पास निकल करके आएगा बेटा कितना, फाइनली मेरे पास दोनों स्टेप को सॉल्व करने के बाद ये बनेगा, मैं जरा से सॉल्व करके देख लूँ, ये बनेगा 224/105 माइनस 224 डिवाइडेड बाई 105। ओके, आई एम सॉल्विंग 20 डिवाइडेड बाई 21 माइनस
106 डिवाइडेड बाई 35। सो फाइनली 105 और 224। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज फाइनली आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। ओके, सो px is equal to the value of px is equal to 8/35 p4 plus 4/5 p3 plus 40/21 p2 प्लस x/5 माइनस 224 डिवाइडेड बाई 105। ओके, बट वी नो दैट x इज इक्वल टू p1 एंड 1 इज इक्वल टू p0 पुटिंग इन above इक्वेशन। सो above इक्वेशन इज px इज इक्वल टू 8/35 p4 प्लस 4/5 p3 40/21 p2 प्लस 1/5 p1, दिस इज p1 माइनस 224 डिवाइडेड बाई 105 कैन बी रिटन एज p0। This is my final answer. If you have any doubt or you have any cross question, you can directly ask me. Okay? बेटा कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि सर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो तो इंग्लिश का यूज़ किया करो, इसलिए आई एम यूजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, हो सकता है मैं बाई लैंग्वेज का भी यूज़ कर दूँ। ठीक है ना? आपका कोई यहाँ तक डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। मेरे ख्याल से तो क्रिस्टल क्लियर होगा। आपको डाउट अगर लग सकता है तो भाई मेरे ख्याल से तो यहाँ डाउट लग सकता है। ओके, ये वाले रिजल्ट निकालने में, इस वाले रिजल्ट को निकालने में, ये रोड्रिग्यो फार्मूले से जो है ना, कल इसके ऊपर मैंने पूरे का पूरा क्वेश्चन करा रखा है आपको। आप उस क्वेश्चन को देखोगे ना, आपकी समझ में आ जाएगी बात। ओके, फिर भी अगर आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को डालना, मैं आपकी हेल्प करूँगा।